Hello everyone and welcome to this week's weekly market view for Monday the 29th of August to Friday the 2nd of September 2022. My name is Vishal and I'm going to be talking about charts and some important key levels for this week. Let's get started. Alright, so let's start our analysis with the Nifty chart and today, the 29th of August 2022, we had a significant gap down opening based on the global cues. And let's start with the monthly chart. So, on the monthly chart, we are seeing how Nifty is unable to sustain at these highs, and we spoke about this is that whenever the price comes to these highs, we are seeing some kind of a selling pressure coming in the Nifty. Now this could be a little bit of profit booking coming in from the institutions, and this usually happens when market comes very close to its all-time highs. If you look at the monthly chart, we are still going to rely on this monthly demand zone where prices have given us a nice bounce from this area over here. So this is that area 15,300 to 13,618. We'll go to the weekly chart and see what the picture on the weekly looks like. On the weekly chart, we are seeing that prices have hit this supply zone, and we saw a significant reaction from this area. Last week as well we had a gap down, and even this week we have a big gap down. Now what is likely to happen is that the markets might not go down immediately or may not go up immediately, and they are likely to stay in this very broad range of 17,781 to 18,121 to the upside, and maybe to the downside we will probably have to come down all the way on the weekly towards these levels. So in the interim scenario, current market price is at 17,300. The range is slightly widening to the downside, and now the range is going to be 16,305 to 15,855 to the downside, and to the upside it's going to be 17,781 to 18,121. So unless and until these ranges violate or break, market is going to be trading in a consolidation between the supply zone here and the demand zone here. Let's go to the daily chart, and if you look at our daily chart, this is how the chart on the daily looks like. So as I mentioned, and I've been mentioning in the past weekly review sessions also, is that Nifty is reacting more or less from this area of supply, and this is that pivot area, and now creating new levels of supply as we go along. If you keenly observe, we had also pointed out this level of demand in our last or in our past sessions where prices just barely came in, touched the level and moved up. So right now what we are seeing is we are seeing a little bit of a corrective move to the downside. So this area now in the coming weeks or in the coming days is going to be very crucial for the Nifty. If 17,000 level holds onto the Nifty, then we are likely to get back into this consolidated range of 17,000, and markets can try and move towards the 17,900 handle or even the 18,000 handle to say so. But by any chance if this range breaks to the downside, then what's going to happen is this is going to be a very key area on the Nifty, because now if 17,000 is broken to the downside, then the markets will probably try and retrace back to 17,500 levels, and this might lead for the price to go even further down. So this is going to be a very key area to watch out for, and at the moment right now as we speak, market is taking a pretty decent support at this level and trying to push up to try and fill this gap. And who knows, within a day or two we might see the markets again moving towards 17,500 and then again returning into a consolidated range. So on the daily chart, the range is becoming a little bit tighter, and a tight range implies that sooner or later this range is going to expand. So we might have a drastic move either to the upside or we might have a move to the downside. So this is something to watch out for. If you look at our volatility indicator at the bottom here, so option premiums were
very deflated in the past week, or even the last week to say so. But today, because of the gap down, we are seeing a big spike in the implied volatility. So this is indicating that options premiums from being cheap have become fair. So they have not yet become expensive, but they are become a little fair, which is probably indicating that if I'm having a consolidated bias, and if I'm expecting the market to remain range bound, I can use some non-directional strategies to plan and take some trades on the Nifty, right? So let's quickly also have a look at the open interest levels on the Nifty. So these are the current open interest levels on the Nifty, and this is the 1st of September data, and we can clearly see here is that initially when the market gapped down and went below 17,200, so there is a very strong put writing at 17,000, and this is exactly where that demand zone ends. And that is why I'm saying that this 17,000 handle is going to be very, very crucial, and market might take a big support and at those levels once again, and it might just remain range bound between 17,000 odd levels to 17,500 levels. Once the 17,500 level breaks, then we are more keenly contesting for 17,700 and then later on the 18,000. But for the time being, for this week, we are expecting the markets to be remaining range bound between 17,000 and 17,500 levels. And this is what our open interest data is showing us or telling us. So what I'm going to do now is I'm just going to repeat a few things in Hindi, especially to our Hindi subscribers over here who are not very fluent in English and want to know the analysis in Hindi. So अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है 15,300 के लेवल से, और अभी मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में है. अगर हम वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट इस वीकली सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से ये जो आपको करेक्शन दिखाई दे रहा है ये आ रहा है मार्केट में. अभी ये जो डेली चार्ट पे जो लेवल है 17,000 से 17,170 का जो लेवल है, ये बहुत ही क्रूशल है अपने मार्केट के लिए, क्योंकि अगर ये 17,000 लेवल का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे जितने लोगों ने पुट सेल किए हैं नीचे की तरफ, अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो जिन्होंने भी पुट बेचे हैं उनको भागना पड़ेगा उन पुट्स को कवर करने के लिए. और जब ये सब चीज़ जल्दबाजी में होती है तब हम देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही तेज़ी से गिरावट आ सकती है. लेकिन अभी फ़िलहाल इस हफ्ते के लिए ये दो लेवल्स बहुत ही क्रूशल होंगे मार्केट के लिए, 17,493 टू 17,721 टू दी अपसाइड, और नीचे की तरफ 17,166 टू 16,999. आज मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन होके भी मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है और अच्छा खासा बाउंस भी दिया है. तो देखते हैं अगले हफ्ते में ये लेवल कैसे रिएक्ट करते हैं, या अगले दिनों में ये लेवल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. लेकिन निफ्टी का रेंज जो है वो काफ़ी अभी थोड़ा सा नैरो हो गया है, और जब भी रेंज नैरो होता है दोनों सप्लाई और डिमांड के बीच में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रेंज जो है ये टूट जाता है. तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले दिनों में ये रेंज जो है वो टूट सकता है और बहुत ही बड़ा मूव इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ सकता है. अगर हम नीचे ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी देखें तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो थोड़े से अभी महंगे हो गए. पिछले हफ्ते में प्रीमियम जो थे वो सस्ते थे, लेकिन अभी हमारा जो आईवी इंडिकेटर है वो बता रहा है कि ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो थोड़े बहुत महंगे हो गए. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा और रुक सकते हैं ताकि ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो थोड़े और महंगे हो, और तभी हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं. और अगर आप एक कंसोलिडेशन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में, तो आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी प्लान कर सकते हैं जो कि मिक्स बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस के हो सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी एवरीबॉडी, एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द बैंक निफ्टी. सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी.
And if you look at the monthly chart of Bank Nifty, it's very, very clear that the monthly chart of Bank Nifty is much, much stronger than the Nifty. तो प्राइस जो है वो अभी तक डिमांड जोन तक आया ही नहीं है, राइट. एक बार आके नया हाई दिया है, लेकिन यहाँ हम मंथली चार्ट पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है टुवर्ड्स दी ऑल टाइम हाइज. तो हमें थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस यूज़ करना होगा लॉन्ग्स की तरफ. इफ़ यू लुक एट द वीकली चार्ट, the weekly chart very very similar to the Nifty is also reacting from a tested weekly supply zone. In fact, this time around price जो है वो थोड़ा सा और deep गया है supply zone के अंदर. And right now we are seeing that market is still taking help of this weekly demand zone. ये जो weekly demand zone है ये Nifty पे भी है, right? So what can happen in the coming session is, and let's see if we are able to anticipate what I'm trying to say here, is that in the upcoming trading sessions we could see Nifty we could see Bank Nifty range bound between these two levels, that is 39,395 to 40,200 and 37,888 to 37,223 levels. These are going to be very very crucial levels till and until market either does something like this and breaks to the downside and then starts moving drastically towards the next level of demand, which is here. Is it going to be easy for the Bank Nifty to do that? I don't think so. But in case if the move comes because of this higher time frame weekly supply zone, then we are likely to see a big drop in the Bank Nifty as well, right? So let's take it step by step. Let's not worry too much about what the market is likely to do further to the downside. But right now the market is likely to take a bigger support over here, right? And this is a weekly zone. तो ये बहुत ही बड़ा zone है. It is not going to be that easy for this zone to break. अगर ये zone टूटता है तो फिर नीचे की तरफ ये लेवल ओपन आउट हो सकता है. अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट से भी निफ्टी ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है. और आज अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी करीबन एक 900 से 1000 पॉइंट का लो दिखाई दिया था और तब से लेकर अभी तक अच्छा खासा बाउंस बैंक निफ्टी ने भी दिया है. अगर हम ऑप्शंस प्रीमियम्स की वॉलेटिलिटी देखें, इफ यू लुक एट द वॉलेटिलिटी हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड. तो कई हफ्तों तक वॉलेटिलिटी जो है वो कम थी, ऑप्शंस के प्रीमियम सस्ते थे. अभी ऑप्शंस के प्रीमियम्स थोड़े महंगे हो चुके हैं. अभी हम अगर डेली चार्ट देखें तो एक नया सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया है, जिस तरह से निफ्टी पे बन चुका है, बैंक निफ्टी पे भी बन चुका है. और अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी जो है वो एक टेस्टेड लेवल ऑफ डिमांड से रिएक्ट कर रहा है. क्या ये डिमांड होल्ड करेगा और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ वापस फिर से जाएगा, ये हमें अगले दिनों में पता चल सकता है. सो वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज whether the market is going to remain range bound or the market is likely to consolidate and then later on break to the upside or to the downside. So again, now we are more or less bouncing from the level of demand. So try to avoid shorting very very close over here. अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने हैं तो आपने थोड़ा सा ये जो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई है वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं. अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें बैंक निफ्टी का, सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दी ओपन इंटरेस्ट ऑन बैंक निफ्टी. सो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 38,000 के लेवल पे है. एंड अगर हम वापस इस चार्ट को देखेंगे तो आज जो बाउंस आया है वो बराबर उस लेवल से ही आया है. तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो ये हफ्ते 38,000 के ऊपर ही बंद करेगा. इट विल नॉट क्लोज बिलो 38,000. वाई? बिकॉज द पुट ओपन इंटरेस्ट इज शोइंग अ वेरी वेरी हैवी पुट राइटिंग एट 38,000 लेवल्स. ऊपर की तरफ 39,000 का जो लेवल है वो की होगा. अगेन इट्स अ राउंड नंबर, 1000 इंटरवल स्ट्राइक्स. तो हम इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो 38,000 से 39,000 के लेवल तक
कंसोलिडेट करेगा. अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं और आप कोई ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, you can go ahead and create a non-directional strategy keeping these two key areas in mind. Alright, let's move on to the USD INR. Now, the USD INR is a very, very key market because it is highly correlated with the Nifty, right? So if you see, we are expecting the USD INR to keep moving up. Right now it has crossed the 80 handle. So हो सकता है कि जब भी 80 handle USD INR क्रॉस करे तो RBI इंटरवीन कर सकता है. Okay, so right now the rupee is becoming weaker and the dollar is becoming stronger. जैसे ही RBI इंटरवीन करता है, there is a possibility that we might see a little bit of a corrective move on the USD INR. सबसे जो नज़दीक वाला डिमांड जोन अभी USD INR पे बना है वो करंट मार्केट प्राइस से 77 लेवल पे है. इट्स एट अराउंड 77.07 to 75.20. And if you look at the weekly chart, there is also a level of demand created over here around 78 levels. So right now the daily chart is indicating that the USD INR has given a breakout. Now one key aspect that demand supply traders need to keep in mind is कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है बहुत सारे लोग जो है वो बाइंग की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और 80% नियरली 70%, 80% टाइम्स और समटाइम्स इवन 90% ऑफ द टाइम्स ये जो ब्रेकआउट होता है दिस लीड्स टू समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ फेक आउट या फिर इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट भी कह सकते हैं. सो द इंटेंशन इज दैट जब तक हमें ये जो डेली कैंडल है उसका पूरा क्लोज जो है द एंटायर क्लोजिंग इज नॉट अबाउट दिस सप्लाई, ट्राई नॉट टू इनिशिएट एनी लॉन्ग पोजिशंस बिकॉज विद इन नो टाइम इफ दिस टर्न्स आउट टू बी अ फॉल्स ब्रेकआउट we can see the markets or the USD INR drastically falling down, and all these people who have bought the USD INR to the long side are going to get trapped into this false breakout. Okay, so just a word of caution, and I'm sure everybody is intelligent to understand when not to take a trade as well. Alright, let's talk about the sector for the week. So we are going to analyze the financial services sector. We keep on doing this analysis every week, so every week we pick up a sector. हम एक सेक्टर चूज़ करते हैं और उसके रिलेटेड एक स्टॉक चूज़ करते हैं. अगर हम सेक्टर पे नज़र डालें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर मोर और लेस एक बैंक निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है. अगर हम देखेंगे कि जैसे ही मार्केट क्लोज टू ऑल टाइम हाइज आता है हम थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखते हैं इसके ऊपर. अगर हम डिमांड जोन देखेंगे तो ये एक टेस्टेड डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है. अच्छा काफ़ी अच्छा बाउंस भी आ गया है ऑन द मंथली चार्ट. सो मंथली चार्ट इज़ नॉट लुकिंग वेरी बेरिश राइट नाउ ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज. व्हाट इज़ अ एरिया ऑफ कंसर्न इज़ दिस वीकली चार्ट. सो अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो ये जो सप्लाई जोन है यहाँ से 2 बार मार्केट ने रिएक्शन दिया है और जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी चार्ट्स पे ये एक वीकली का डिमांड जोन बन चुका है. Now, ideally speaking, if the prices are close to higher time frame supply zones, ideally this weekly demand should not hold. ये break होना चाहिए. But कई समय पे जब market strong होता है, there is a possibility that this weekly demand zone can hold and go back and sit into this level of supply. तो सभी charts पे same picture हमें दिखाई दे रहा है. निफ्टी पे भी same picture है, बैंक निफ्टी पे भी same picture है, फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट पे भी सेम पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है. सो ये जो 17,532 से 17,260 का जो लेवल है ये फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी एक इम्पॉर्टेंट और की लेवल होगा. वेरी लाइकली द मार्केट इज लाइकली टू बाउंस एंड स्टार्ट पुशिंग अप अगेन टुवर्ड्स दिस एरिया ओवर हियर. सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज. इफ यू लुक एट द डेली चार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन it's taking that support on the daily level of demand which is also coinciding with the weekly level of demand. ऊपर की तरफ एक गैप बन गया है. तो यूजुअली क्या करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दे विल ट्राई टू पुश द मार्केट एंड ट्राई टू फिल द गैप टू द अपसाइड.
All right, so these are the key levels on the financial services sector. Let's look at a key stock. We are going to be looking at Bajaj Finance, and let's closely look at Bajaj Finance to see what is the opportunity on Bajaj Finance. So, if you look at Bajaj Finance, again, very similar picture. Price is reacting from this monthly supply. तो एक इंडिकेशन डेफिनेटली बनता है कि बजाज फाइनेंस पे मुझे अभी करंट मार्केट प्राइस पे कोई लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करने हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो एक मंथली सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, राइट. वी आर हाई ऑन द कर्व. नाउ लेट्स गो टू द वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे बजाज फाइनेंस पे वीकली लेवल से भी एक रिएक्शन आ रहा है. अगर हम देखेंगे तो ये वीकली सप्लाई है. यहाँ से 2 बार मार्केट ने काफ़ी अच्छा सेल ऑफ दिया है. ये जो पहला जो सेल ऑफ आया था वो एक बड़ा सेल ऑफ आया था. हो सकता है कि दूसरी बार वापस एक बड़ा सेल ऑफ दे. तो इस कंटेंशन में मुझे बजाज फाइनेंस में कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है. अगर मुझे जो भी ट्रेड करना है इनिशिएट, वो शॉर्ट ही ट्रेड होगा. सो लेट्स लुक एट सम की लेवल्स ऑन बजाज फाइनेंस. और बजाज फाइनेंस के जो इम्पोर्टेंट और की लेवल्स हैं, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस की लेवल्स. सो लेट्स गो टू अ 75 मिनट चार्ट. और अगर हम 75 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो काफ़ी लेवल्स सप्लाई के और अच्छे लेवल सप्लाई के बन चुके हैं बजाज फाइनेंस पे. सबसे जो बेटर लेवल जो मुझे लगता है जहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट बन सकता है बजाज फाइनेंस पे, इज़ दिस लेवल ओवर हियर, 7278 to 7378. It has everything to go for it. There is no level of demand anywhere close by. These are all filled orders, and price should not have a hard time to come all the way down from this area over here and come down all. So if you have a little bit of a bearish outlook, you can create a bearish setup either using futures or either using options on Bajaj Finance. अगर ट्रेड इनिशिएट होता है, द ट्रेड प्लान विल बी, दिस विल बी योर एंट्री प्राइस. सो थोड़ा सा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे. स्टॉप लॉस जो जाएगा वो थोड़ा सा इसको हम लेग रूम देंगे स्टॉप लॉस के लिए. और नीचे की तरफ जो टारगेट होगा, प्रेफरेबली एटलीस्ट आई विल लुक टू बुक प्रॉफिट्स जस्ट प्रायर टू दिस कैंडल लो. ओके, सो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है. और बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल होता है, राइट. इंट्राडे के लिए शायद मार्केट ने ये गैप फिल दिया तो शायद मार्केट यहाँ से भी टर्न करके नीचे की तरफ आ सकता है. बट मुझे फिर भी लगता है कि बिकॉज निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी डिमांड में है, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टिंग करना बजाज फाइनेंस पे थोड़ा अग्रेसिव होगा. सो बेटर इज़ यू कंसिडर दिस लेवल. All right, so this is the analysis for the week. I hope you enjoyed the analysis. If you do like our channel and our analysis, please make sure to be a subscriber and click on the like button. All right. Thank you very much, everyone. See you around next week for some more analysis on sectors and stocks, Nifty and Bank Nifty. Take care, everyone. See you next week. This should not be treated as a recommendation. Please conduct your own analysis or consult a financial advisor before investing.